یہ جو آپ ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ جی سر وہ تو 2011 میں کمیشن بنا تھا. یہ اس کی ججمنٹ میں بتائیے. جی سر اس میں سر جو ہے ایک ہی کتاب ہے. یہ پیراگراف میں لوٹ جو پیراگراف اس میں 3 ہے یہاں سے شروع ہے کہ 3. جی سر پیج 2020. کلنگز کی بات ہے زیادہ, مسنگ پرسنس کی بات کہاں ہے؟ کلنگز, ابڈکشن فار رینسم, سیکٹیرین کلنگز. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا مسنگ پرسنس کی بات, وہ کہاں ہے اس میں؟ جی سر وہ ساری اس میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے. یہ تو زیادہ تر ٹارگیٹڈ کلنگز ہے نا. جی رینسم, سیکٹیرین کلنگز. جی یہ پیراگراف 5 سر اگر دیکھیں گے IDPs. We direct the government, پیرا 5 سے اوپر 3 لائنیں. We direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time پیراگراف کون سا پیج بتائیے؟ کون سا ہے یہ؟ page 2005 آرڈر آف دی کورٹ نہیں 2005 اس میں. وہ سب پیراگراف 5 دا فیڈرل گورنمنٹ. جی جی فیڈرل گورنمنٹ سے اوپر کی 3 لائن اینڈ دین فیڈرل گورنمنٹ پیرا 5 میں بھی اور پھر دین 6 بھی. یہ تو مرڈرز اینڈ کلنگز ہوئی تھی نا, سیکٹیرین وائلنس. جی لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے. جی نیکسٹ سر جو ایکسکلوسیولی مسنگ پرسنس کو ججمنٹ ہے سر دوسری PLD 2014. یہ سوموٹو ایکشن لیا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے. PLD 2014 سپریم کورٹ 305. ریلیونٹ اس کے پیرا ہے سر 16 اور 17. پیراگراف 16 اور 17 میں لو پیج ہے 320. As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture. It is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The acting Defense Secretary through the though he apparently did his best could not achieve the object for which. یہ ریلیونٹ ہے. جی مطلب ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ریلیونٹ ہے. جی مطلب اینی ادر کیس؟ جی سر نیکسٹ سر ہے اس کا پیرا 16 بھی اینڈ 17 بھی سر. 17 جی 17 میں سر ہے اور 18 میں بھی کچھ ڈائریکشن دی ہیں. 17 پیج اگلے پہ ہے 321 پہ. It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so and so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006 despite the fact that the Nepal had not ratified the same. کریکٹ. آگے جی سر یہ سر پھر اس کو 18 میں بھی تھوڑا سا اس حوالے سے. ادر ججمنٹ؟ جی سر دوسری ججمنٹ سر نیکسٹ ہے مائی لارڈ آتھر جج ہیں دھرنا کیس میں فیض آباد دھرنا کیس PLD 2019 سپریم کورٹ 318. اس کا ایجنسیز کے رول کے حوالے سے بھی 318 PLD 2019 سپریم کورٹ 318. اس میں ریلیونٹ پورشن کیا ہے؟ پیرا 43 میں لارڈ پیرا 43 42 میں لارڈ 42 سے پیج 348. The report submitted by پیراگراف اس سے مسنگ پرسن کا کیا تعلق ہے؟ سر رول آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ان کا کتنا ہے, کیا رول ہونا چاہیے, کیا ان کا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اپنے مینڈیٹ میں رہے. اسپیسیفکلی کچھ ہے اسپیسیفکلی مسنگ پرسنس کا تو ایز سچ نہیں لیکن اسپیسیفکلی اگر اس میں ریلیونٹ ہے وہ جو ابھی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے جو کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ. جی ان کو تو پروٹیکشن ملتی ہے کہ وہ پیراگراف پڑھیے نا آپ. جی لافل اسمبلی وہ کر سکتے ہیں. اس یہ دیکھیے پیراگراف 2 پڑھیے, پیراگراف 53 کا. جی
My lord. 53 جی سب 53 کا 2 پڑھیے. جی. Every citizen. Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. یہ تو ریلیونٹ ہوگا فار دی پیپل ہو آر پروٹیسٹنگ. My lord, my lord. پھر پیراگراف 3 بھی پڑھ لیں. جی سر. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which it must. I'm surprised you are citing this case. میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے جناب کو کہا تھا. جی سر ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے ود ان دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں اور کورٹ ساتھ. اگلا بتائیے. ملوٹ اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر. میں جناب کو چکا اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں. PLD 2022 سندھ 264. جی 264 سر. PLD 2022 سندھ. PLD 2022 سندھ 264. یہ بھی مسنگ پرسنز کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف نہیں ایکچوئل کیا چیز پڑھے ہیں مجھے سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل باتیں ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی یہ 2 ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر, وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں. مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن یہ اسی حوالے سے کہ جو ایک تو ہے سر PLD 2021 اسلام آباد پیج 1. جی ریلیونٹ پیج پیرا 3, 4 and 5. The incident, یہ وہ متی اللہ جان والا کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. The incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کل تو آپ متی اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے, آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا, پہنچا نہیں تھا وہاں تک. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی. ان کی ذمہ داری ان کی شاید انٹرونشن سے ہی یہ جلدی باہر آئے ہوں, ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا. نہیں آپ کا غلط فہمی ہے. آنریبل کورٹ کی بھی انٹرونشن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کچھ فہمی تو ہو سکتی ہے, غلط فہمی شاید نہیں. آپ سنیں گے تو بتا دیں گے آپ کو. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں ہم بہتر نہیں جانتے. یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے یہ ہو گئی تھی ریکارڈ, کیمرہ لگا ہوا تھا. کیمرہ لگا ہوا تھا جی, اس کا ریفرنس ہے جی. شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار, تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ.
It was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place, and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken a stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 minute का केस ये सॉल्व होता था 2 मिनट में. नहीं, देखिए या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐश कर लें. हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे. ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था. नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस. बस ठीक है. अच्छा, ओहो तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं नहीं बंदे को छोड़ दो. ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था. She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं. अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा कि जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता. आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए. सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस. सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है. और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा. बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया. अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से. रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर. या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए. इस केस से पहले एक और केस था जो कि अब्सार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे. हमने कहा हमारे सामने आके बात करें. क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की. बिल्कुल क्यों? वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है. नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है. वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की. ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना. हमारा काम जरा सा देखें. आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स. तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है. अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए एफआईआर काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें. अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं. हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें. और वो नहीं कर रहे. ये नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर. प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर. आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी. जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences. ऐसे कैसे बाहर जाते हैं वो? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी. वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा. 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months. फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा. शायद वो, बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है. मैं इस पे आगे चलता हूँ. शाहीन साहब, you are up now. I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल है जिसका आपने जिक्र किया उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे. मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी करें ना. फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है. नहीं, हमारा हो योर लॉर्डशिप.
لیکن اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا. ہم یہ کہتے ہیں مائی لارڈ کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی اور دیٹ ہیز بین جی وہ تو فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے. ویٹ فار سم ٹائم. جی سر اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر ہم آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی پبلک امپورٹینس اور پبلک ایٹ لارج. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر نہیں ٹھیک ہے نہیں 2-4 نہیں سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں تو جناب کا اونلی ان ریلیشن ٹو دی سی ایم اے وہ آپ کی آفس آبجیکشن. دیکھیں پھر اب آپ پہ تشریف رکھیں ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں نا. نہیں سر نہیں میں تو اپنی بات واٹ بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن. دیکھیے نا ابھی ایک کنسالیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لاء سائٹ کرنا ہے. جی کیس لاء ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں. ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا آبجیکشن ریموو ہو گیا لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں نے آپ کو انفارم کر دیا. کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے. آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی بات نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ. جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکسمن کدھر سے بن گئے وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا پلیز بیکم اے پروفیشنل. سر obtain a وکالتنامہ and file a وکالتنامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا. آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا. وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی. ان کو بلایا جائے گا وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. جب اس پر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک ججمنٹ سے ریفر کر بنانا چاہ رہے ہیں پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی. Please don't do this. نہیں سر جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر. 1358 جی سر 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر. اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں. Now can we go to the next case? تھینک یو. کتابیں اٹھا. یہ امینہ مسعود صاحبہ جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ ہماری میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں. تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا. افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے
2005 में किसकी हुकूमत थी? 2005 में परवेज मुशर्रफ की दौर में हुआ था ये। उसके बाद फिर सो मोटो के तहत ही तकरीबन ऑल पाकिस्तान से 41 petitions। आपके शौहर क्या करते थे? मेरे शौहर जी बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, उनके कॉलेजेस हैं इस्लामाबाद में। रिकवर हो गए नहीं हो गए जी? रिकवर हुए अभी नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं तो आपके पास बिजनेसमैन और ट्रैवल एजेंट को इंटरेस्ट क्या होगा स्टेट का उनको उठाने में? एलिगेशन आपका क्या है? हमारा तो यही एलिगेशन है कि जो लेटर ऑन जो लोग रिलीज होकर आए उन्होंने एविडेंस दी कि नहीं भाई, मेरे हस्बैंड के खिलाफ तो अभी तक कोई एलिगेशन नहीं। रीजन क्या था? लॉर्ड कोई रीजन नहीं है। नोबडी टोल्ड मी एवर कि कोई रीजन है। देखिए स्पेकुलेशन तो कर सकते हैं ना जी जी कि ये ज्यादा बोलता है हुकूमत के खिलाफ, इसको उठा लिया, मतलब या ये परवेज मुशर्रफ के साथ कोई उनकी दुश्मनी थी, इसको उठा लिया। कोई रीजन आपके जहन में है? लॉर्ड मेरे जहन में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि माय फादर इन लॉ इज आल्सो मिलिट्री पर्सन, इज अ कर्नल रिटायर्ड, और वो उस वक्त मुशर्रफ के सीनियर भी थे। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई यू थिंक द स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड और यू नॉट एलिजिंग इट्स अ स्टेट? आई थिंक इट्स स्टेट बिकॉज जो भी लेटर ऑन 2007 में 2006 में 11 में 8 में जो लोग रिहा होकर आए उन्होंने इसकी एविडेंस दी। The star witness was इमरान मुनीर। देखिए दो तीन वजह हो सकती ना, एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो गलत फहमी में किसी को उठा लिया, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फिर द मिनट दे रियलाइज ये तो गलत उठा लिया, इसको छोड़ दो, या कोई मे बी ट्रम्प्ड अप चार्ज या जो भी उनके जहन में हो, जिसने भी ये काम किया कि जी ये ऊपर से हुक्म आया है कि इसको उठाना है, इस वजह से ये ज्यादा एक्टिविस्ट है, ये है वो है। तो आप जो बता रही हैं कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो मैं जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या हो सकती है। 2001 से लेके यहाँ पे एक वॉर एंड टेरर, तो या तो आप कहें कि वो सपोर्ट कर रहे थे किसी को, मुजाहिदीन को, या क्या, तो फिर तो बात समझ आती है ना। वो तो एक सोशल वर्कर भी थे, उनका एक हॉस्पिटल भी था, वो आज भी चल रहा है, जो अपने आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं उठाया है, मगर मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है। देखिए जब तक इंसान को वजह ना पता चले तो फिर कल्प्रिट जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है ना कि भाई किसको फायदा हो रहा है, तो उस तरफ जाती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कि ये इसका कोई जातियात का झगड़ा था या कोई जमीन का तनाजा था या वो उसके खिलाफ बात करता था, तो उससे कड़ियां जुड़ती हैं, हाँ ये पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ ने जो क्या उम्र थी जब वो he was 41। आपका ये केस कमीशन में चल रहा है, ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, आपने कोई कमीशन ने 2013 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। क्या उसका क्या ऑर्डर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो ऑब्वियसली क्योंकि है ऑर्डर आपने लगाया इसमें? नो सर, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑर्डर था, बिकॉज आपने लिखा है कि अर्लियर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए हैं, 600 प्रोडक्शन ऑर्डर कमीशन ने इशू किए थे। तो बिल्कुल, that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home किस जगह? on 30th July 2005। रावलपिंडी घर से निकले हैं और उनके दोस्त बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहे थे। दोनों ने डेवू बस ली है टू मीट। कहाँ जा रहे थे वो? पेशावर जा रहे थे दोनों। अच्छा, क्यों? उनके एक दोस्त है अब्दुल गनी, उनके साथ मिलने के लिए। तो जब उनसे भी राब्ता किया गया, अब्दुल गनी भाई से भी, तो उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। आप किसको सस्पेक्ट करती हैं? एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज भी हैं, तो आप
आप किसको सस्पेक्ट करती है, मतलब लास्ट आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? जो एविडेंसेस हमें मिले थे जो कि रिलीज पर्सन्स की तरफ से थे, तो उन्होंने तो यही बताया था कि वो आईएसआई की कस्टडी में थे, उन्होंने देखा था जी, और वो ईद के दिन थे, पर्सन्स उनको जानते थे? जानते नहीं थे, मगर उन्होंने फिर भी उनका नाम पूछा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उनके लॉयर ने मुझे बताया कि इस तरह से इमरान मुनीर ने मसूद जंजुआ को देखा है, और उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें सामने आई। इस बात को कितना अरसा गुजरे? इसको 2007 में ये हुआ था, और उस वक्त 2005 से लेके 2018 तक तकरीबन मैंने 749 CMs डाली हैं HRC 965 में, और जो कि सिर्फ मेरे हस्बैंड से पर्टेनिंग नहीं थी। फिर एक जब ये JIT बनाते हैं ना, तो JIT में आपने कभी अपीयर हुई है, पार्टिसिपेट किया JIT में? सर सब कुछ हुआ था, मगर JIT में ISI के और IB के सारे मेंबरान होते हैं ना, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है उसमें, SSP लेवल पे या DIG लेवल पे, तो 8-10 लोगों की जो JIT बनती है, कभी आप पेश हुई है JIT में? बेशुमार दफा पेश हुई हूँ, रावलपिंडी में, CPO के ऑफिस में, कमीशन के अंदर, और हर चीज। सर उस वक्त ये होता था कि तमाम केसेस जो कमीशन में चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जब वहां से डिस्पोज हुआ तो यहाँ से आपने अभी कहा कि खुदा न खास्ता वो डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो क्या रीजंस थी उसकी? उनका तो यही कहा है कि वो वज़ीरिस्तान में उनको जो है तालिबान ने और इस तरह एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने मार दिया, बट ये कि उस वक्त के जो जजेस थे, जिस तरह जवाद ख्वाजा साहब क्या गए थे बलूचिस्तान? नहीं, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था क्योंकि वो उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे पाए थे, ना वो ये कह पाए थे कि कहाँ पर उनकी कब्र है। What do you want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. करें क्या, बताएं ना। जो उनकी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो कमीशन में तो वो सारे केस डिस्पोज ऑफ हो गए थे 2018 में। बताइए ना, कमीशन को छोड़ दीजिए ना, अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक 2-3 बातें ना। एक तो ये आपने इस मौजूदा हुकूमत या इस मौजूदा हुकूमत के जितने भी अहम एहलकार हैं उनके खिलाफ तो एलिगेशन है नहीं। अब आपका एलिगेशन है कि 2005 में उनको गायब हुए, वो 30 जुलाई 2005। 30 जुलाई 2005, तो इस बात को कितने साल हो गए? 15, 25 तो कितने साल हुए? 18 साल। जी सर। हाँ 18 years हो गए। 18 साल। उसको 40 years एज की। अब 18 years हम कोई ऐसी चीज बताएं जो कि कुछ हम मदद आपकी कर सकें, मगर कोई क्या हम कैसे कर सकें? कोई या तो देखिए, आप कभी होता है ना कि जी कोई तंजीम से वाबस्तगी थी, ये कोई गलत बात तो नहीं, तंजीम इंसान ज्वाइन कर सकता है, फंडामेंटल राइट, अनलेस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई और बिना पे जी हुआ हो तो कहीं शक जाता है ना इस तरफ या उस तरफ, या फिर वो गलत फहमी में उठा लिया हो या फिर छूट जाते हैं आमतौर पे लोग। हो सकती है क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ टॉप ऑफिशियल से मिलते थे, माय फादर इन लॉ, आपने कहा आपका तो कनेक्शन भी है आर्मी से। जी, फादर इन लॉ वाज, क्या कनेक्शन है आर्मी से? माय फादर इन लॉ इज अ कर्नल रिटायर्ड, एक्चुअली ही विल आल्सो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सन। Of course, and for this matter, he met the president. क्या मिला उनको? क्या परवेज मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ISI के जो DGs थे इनसे मुलाकात। क्या उनको मिला, बताया क्या तो किया? उन्होंने उनको यही आदमी है, हमने इसको उठाया हुआ है या नहीं? हमारे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा उनको मिली कि हम अभी हैव नो इंटरेस्ट इन योर सन, वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपके बेटे को क्यों पिक करेंगे। फिर जी नहीं तो फिर हम क्या करें? कुछ आप बताइए ना कि जब वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है, हमने ये केसेस उठाए बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस, ठीक है, बट एंड दिस मस्ट स्टॉप। Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think अब शायद नहीं हो रहा है जो पहले होता था। I don't know, I may be wrong. मगर I've been Chief Justice Buluchistan as well, so बट तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं। आप क्या, हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई
मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। अगर सेकंड बिल्कुल मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह आप से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे। quite a lot of torture over these years Okay, you have a lot because of experience. you know, You have more experience than us. exactly. तो अब आप बताएं what shall we do for you? My lord, for my case, if for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की आप बात बताएं ना, कर वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट मैं करते हैं, I वही just लोगों want ने to know the decide करना truth. है। I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए, अगर वो दाना but फास्ता किससे हम पूछें, उनकी किससे डेथ हो गई है, of course मेरे ख्याल में किससे हम मिलिट्री पूछें? से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से of course मिलिट्री से जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ये भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, जी, बिल्कुल। so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some Please, sir. information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about नहीं नहीं, उन पे भी आते हैं ना, पहले we are पहले concerned आपका about पर्सनल one. कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information, My lord, I have taken down the details. and if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. ठीक है, there's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass a order, My lord. but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा एजी साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं, JIT में क्या है वो देखें, वो JIT collectively देख के इनको कम से कम जवाब दे देंगे वो कि एक भाई खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं Exactly, होगा, उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा. It will because be she's gone going through the same process. pain. Yeah. Now if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence, if there, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. my lord. ठीक है? My lord, तो ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband, but for others also. appreciate that. ठीक है? My lord. तो the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ठीक है? These are or any other, It's Ministry of Interior essentially. and or the Ministry of Prime Defence, Minister's office. Ji, because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. he was president at that time. but, Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Yes. Musharraf at that time. Yes. And then He PTI said as that well. we have no interest in And they him. said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So Still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on A behalf lot of these time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, Bilkul. if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I am noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप.
माय लॉर्ड ये जो फर्स्ट तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं, जी जी ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, PTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने ना. जी बताइए. जी सर आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए. हाँ जी खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है. हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो हेबिस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन है. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर हो रही हैं इस तरह से. नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार से हम पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना. अगर हम एक जनरल बात कहेंगे वो क्या जवाब देंगे हमें? माय लॉर्ड इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ. और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना. जी कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं आपने कहा 2005 में या 2002 में. जी ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना. तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं. दो बातें हो गई. देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें. हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं. एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी. एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म. बिल्कुल बिल्कुल. एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं. तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें. बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी तो नहीं बनी. आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई ये पॉलिसी रोक दी जाए कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with If you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and No, but we take some instructions. we want it in writing. all right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. no, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think Not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow or transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think This country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan,
So there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی جی دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think the state needs to be inclusive. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے, کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن. آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک. محمد شریف ورک یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں بتا ہوگا سیکٹری کو, مجھے پتہ نہیں, میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا. پتہ ہے نا کراچی میں ہمارے جسٹس آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج تک؟ تو بڑی ماشاءاللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا ہے. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ ایسے بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر؟ کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو پھر ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر, اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں, سر کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ؟ سر ٹریسٹ کہہ رہے ہیں, ٹریسٹ رپورٹ کدھر ہے؟ یہ ہے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھ کے وہ سارا
ये देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो बाकी है ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में, ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए हैं या नहीं इसमें हुए हैं? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाने केस में कस्टडी में है। असल में सर ये चार इंटर्नमेंट सेंटर प्रिजन्स तो ये इसका मतलब ये है। रिपोर्ट इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ? G91 ये क्या घर है? नहीं सर, ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर, अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, ये मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में। इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. ये हाँ? Not at all. कोई sir. मुतमईन ये नहीं है, payment sir. dispose of की हैं. Honorable ने बड़ा नहीं, एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं हैं? dispose of जो है इसमें हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता not दें। satisfied, sir. Not at एक all. सेकेंड, एतजाज साहब, आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? थोड़े देर नहीं नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? हद तक नहीं सवाल सिर्फ ये। बस ओके। अच्छा, एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। मैं भी नहीं। कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। सुने, ये आप देखिए, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास ये- फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर ये 2005 से- पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम आपको कोर्ट ने। ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे अच्छा, हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल और साहब। जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उसी का केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और कोई रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और ये फ्रंटियर। यही मेंबर हैं फिर? जी 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 5 लोग हैं, हाँ जी। 4 लोग हैं? जी हाँ, हाँ 4 हो गए जी बिल्कुल। आर दे पेड और दिस वॉलंटरी वर्क?
ये सब पे होता है सर, पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेते हैं सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है ना? उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा हाँ? इसे क्यों कर गया जो आदमी? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी ये अटॉर्नी जनरल साहब से उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up. The presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, it is whether quite post-retirement can they, if they are required to do any work. वो आप जो बात कर रहे हैं दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज इन एडिशन टू द पेंशन। Right. So I was not No, aware, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? Interior, sir. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज कमिश्नर इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। अभी हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। विजिट भी किया है वो, आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी। बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे। अच्छा। ये एइत्ज़ाज़ अहसन की पिटीशन मैंने राइट की है। तो अच्छा। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा। वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है। स्टार बनाया हुआ ये कौन से केसेस जो क्लोज हो रही है रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Never. जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the कह रहे notification. हैं हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3
3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Baluchistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Werk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात, बजट और ये? The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था नहीं, प्लस कर दिया है to trace whereabouts 30 into, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's, I mean, there's only this Commission will have it its says that independent Huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं. जी. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons My lord, and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sir. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? Ji. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? Sir, ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. The copies, कौन सा? sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले सर, अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue.
Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? Ji. Sir, page 61, on the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that the special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters / cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case / cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission... But without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now, the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में है, इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 production orders have been issued to the relevant agencies. Only 51 have been complied with. If your lordship may kindly see एक production order जरा page 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the Commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस ये. सर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टैटिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए, तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है. मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ. मैंने पूरी
report ठीक है, we've read it. Page 66 अगर देख लीजिए. पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक second, one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. एक second. Have a look at the production order. जी सर. सैंपल के तौर पे मैंने लगाया. My lord. हाँ, तो वो ये कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है. सही बात है. तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट करता है ये. If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And if नहीं, वो तो want to see ठीक है if ना. those powers were ever Object exercised. is not to send people to jail. No, but The what I'm object saying is to, if the people are illegally detained, to set them Right. free. जी. वो तो बात की बातें हैं. Well, I'm just आप पनिशमेंट में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. that's right, sir. अगर हम पनिशमेंट में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, check this is कर लें. 2020, नहीं, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है. 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief तो Justice. उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा. हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए. नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ. इसमें कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील, पर नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया जी. उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन. मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है. ये ग्राउंड एफ में जो
line, the 8वीं line है, the petitioner therefore urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Articles 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए Aitzaz साहब, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government why have they not been complied with. That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं. एतजाज साहब, मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हों, तो वो तो मुनासिब नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर. विद रिस्पेक्ट, therefore I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके. आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे. फिर आपका एतराज़ यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है. तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है. तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले. ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम. सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो. सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम. आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को. जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं हम क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया, तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में. मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी. अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है. कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में,
ٹھیک ہے, تو وہ بھی دیکھیں ہم یہ برڈن اب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بلوچستان, اب یہ اگر یہ باڈی میٹ ہی نہیں کرے گی, کبھی کام ہی نہیں کرے گی, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اگر کام کریں. آپ اسمبلی نہیں کر سکیں گے, اتنے سارے ممبرز پورے پاکستان میں, پھر وہ کل کو کہے گا جی میں تو ریٹائر ہو گیا, وہ ایک ٹرم کا ٹرم ہوتا ہے, ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشنئرنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے نہیں کبھی چلاتے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو رہا ہے آپ میرا کیس ارجن کر دیں. تو یہ اس میں ذرا سا ہم دیکھیں اعتزاز صاحب, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. The commission appoint ہوئی ہے. دیکھیں وہ دو قسم کے کمیشن ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, وہ پاور ان کا ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے, ہمارا پاور ہے, گورنمنٹ کا, ایک آپ کا پاور ہے, آپ کی پاور کو ایکسرسائز کرے. اور میں اس میں ذرا ایک چیز جو میں نے سول سوسائٹی کے موسٹ پرومیننٹ اینڈ موسٹ افیکٹو بندے نامینیٹ کرنے کو کہا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, دی پاکستان بار کاؤنسل, presidents of the 4 provinces. Why? Sir, they are, abhi ye baki dekh rahe hain, the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will, اور ہمارے بار ایسوسیشن میں ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے, تو نیا بندہ آئے گا, کوئی ہمارا نیا مینڈیٹ لے کے, یہ ایک روسٹر آف دی بار الیکشن کمپٹیشن میں ہو جائے گا. وہ آنے دینا, ان کے کمنٹس آتے ہیں, اگر سول سوسائٹی کو وہ ایڈ کرنا وہ تو ان کا کام ہے نامینیٹ کرنا اور اس کو نوٹیفائی کرنا نا. جی سر, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, ٹھیک ہے, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. آپ یہ دو دیکھیں, ڈائریکٹر جنرل Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. Which was scheduled at 3 o'clock. ٹھیک ہے سر, We don't want to. We are taking this case seriously. یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں, وہ بینچ تو نہیں, 11 بجے لارجر بینچ ہے. پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں, پی ایف یو جے اینڈ 2 senior officers, senior most officers of the inter-services intelligence and the IB. وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا, کمیشن, وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز, اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نوٹیفائی کریں. اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں, آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday ko hum ne bhi koi rakha na case, kya rakha tha? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold, thoda sa ruk jaiye. Monday ko kuch aur hai? There is presidential reference on Monday. Tuesday ko kya? Yes. بینچ کنٹینیو کر دی, تو ٹیوزڈے کو کر لیں. اس سے نہیں پتا اگر ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہاں جا رہے ہو, چھوڑنا چاہتے ہو؟ کمال. اچھا آپ ایسا کریں, کم اپ وتھ سم پریکٹیکل سجیشنز, ٹاک ٹو مسٹر فیصل صدیقی, ٹیک دیز پروڈکشن آرڈرز. بلکہ ہم آرڈر ڈکلیئر ہی کر دیتے ہیں, لکھیں. سوری صلاح صاحب, آپ اس کیس میں. Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. جی صلاح صاحب ہم نے withdraw کر لی. These appeals have been withdrawn. اچھا یہ بتائیے, وہ جو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس نے کیا کام کیا؟
वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी. नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक furnish की है sir. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on the इसमें record. लिखिए वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर दें, ठीक है. ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं. एतजाज़ अहसन फेडरल आपकी एक है 161 है और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं, लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में. ये आते हैं, बताइए. तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we want you to, we will direct this commission to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these cases, all these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, आपकी भी 3 है ना, 1 2 3. जी मालिक, ये विड्रॉ कर दो. 4. जी मालिक, विड्रॉ कर ले. नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से. जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So these petitions have become CPLA infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें 2022, CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है, आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. Okay, MRS आमना मसूद जंजुआ ये केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua,
was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that My lord, it's on and that the- she is not, and that she had approached the commission, क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131, I suppose. आपने किसी ने बताया था अभी पेज? 131. हाँ? 131. 130. Exactly. वो तो law है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. Full stop. Others present, the Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammed Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the Commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammed Sharif Virk. As members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the Commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the Commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. Mr. Khalid Naseem, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the Commission, however, states that the Commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Aitzaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Aitzaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, देखो गाड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी में करेंगे तो अभी नंबर करके उसको लाओ, उसी पर रखें, नंबर करेंगे तो फिर इंटीग्रिटी का इशू आएगा ना, तो उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना, कि तुम्हारे को इशू मिस्टेक बन जाता है, उसको दिन समझेंगे कि मेंटेनेबिलिटी नहीं होती. देख लो. अच्छा ठीक है. तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly,
Another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik. But the same was also but in respect of the same of his objections also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. Aitzaz साहब और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे, missing/enforced, नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से। हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड। That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases. They set and establish a pattern, and that pattern is the one that your lordship has to address. It's similar fact evidence. साहब देखिए ना, I know, देखिए I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then you देखिए एक सेकंड ठहर जाइए ना, that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे। अगर देखिए अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फोकस हम यही रख रहे हैं। पर्सन का ब्रॉड स्कोप है, अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज। जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे दो जुमले तो अर्ज कर लें। चले करिए। मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटीशन। ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है। दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई, इट इज द न्यू मोड ऑफ On what basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जांपल Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. Then on what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम पब्लिक इंटरेस्ट में आ गए। सर 4 लोगों के नहीं है ये। 4 लोगों के आपने नाम लिखे। 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें। आजम और भट्टी 2 तो यही है। Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the दूसरे केस में हमने किया है, नहीं वो तो दूसरे केस में किया है। नहीं मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे। वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला, इसमें तो नहीं किया, दूसरे केस में।
My lord, it was in this case. हाँ It was in this case. इसी में ही था. नहीं वो वाला केस वो जो कंटेम्प्ट वाला था नहीं, इसी में नोटिस हो गया ना वो हाँ इसी में था. इसी बलोच मिसिंग A long day, but वो ये पेज 6 पे बलोच मिसिंग long day for पर्सन you, I know. बट चले हम ये बात भी देखते हैं. अच्छा वो और क्या रह गया था. The commission is directed to submit comprehensive report and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ठीक है. फिर हम बाकी चीजें बाद में कर लेंगे. कमीशन हमारा हो रहा है 3 बजे से, आप भी तो उसमें आ रहे हैं ना हमारे सामने. कुछ बातें रह गई हैं तो हम इसको बताएं. कितना टाइम दें आपको? क्योंकि फिर आप देख लीजिए इनकी कुछ एंग्जाइटी और कमीशन वगैरह आप देख लें. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द कमीशन और नॉट, वो जब रिपोर्ट आपको देंगे उससे बातें आपके जहन में आ जाएंगी. फिर आप क्या करना चाहते हैं तो कोई आप हमें डेट सजेस्ट कर दें. तो अब एक इनसे पूछते हैं. दूसरी बात, एक हमने जो नोटिस ली थी मगर इन्होंने कहा था, मगर इन्होंने दे नॉट कंसर्न विद दैट. सॉरी बुरा ना माने शोएब साहिन साहब. हमने कहा था जी यहाँ से जो लोगों को उठाया गया था, उन्होंने कहा मैं ला रहा हूँ पिटिशन, मैं अमेंड कर रहा हूँ इसको. उन्होंने ना लाए पिटिशन और ना अमेंड किए. अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनका बुनियादी हकूक है. अगर वो कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है. ये नहीं कि उनको धक्के मार से डंडे मार से उनको उठाया जाए. नहीं, उनको बहुत रुस्वा कर रहे हैं, बहुत रुस्वा किया है. एक सेकंड सर, आपने तो नहीं लिया है ना. इन्होंने वादा किया था वो करेंगे, नहीं किया उन्होंने पूरा वादा. हम अब अपने तौर पे कर रहे हैं. वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. ठीक है. That's their fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if and if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You are already appearing for someone or not? No, I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, जस्ट मैंने विजिट किया सर. इट इज अ पैथेटिक स्टेट ऑफ रात को तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटिशन. वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. हाँ, ये आपको देंगे. कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं. इनको ये पूछ लेते हैं इनसे. खालिद साहब आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहाँ खालिद साहब कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे दें, टाइम दे दें 2-3 हफ्ते. भाई आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है नहीं. बात कर रहे हैं यार, एक स्टैंडअप भी नहीं है हमारे पास ना. नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, एक हफ्ते का काम है. 8-10 दिन में कर ले. 8-10 दिन मैक्सिमम. कितने सर कितना टाइम? 10 days. 10 to 15 days देते फिर सर. 10 to 15. Within 10 days. ठीक सर. ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? So if they can share production orders in, let's say, Within 10 days. share production orders जल्दी share कर ले. Report इन्होंने 10 दिन में देनी है, production orders 2 दिन में आ जाएंगे. आप हमें the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days के बाद 2 weeks. No, 2 weeks from now.
ٹھیک ہے پھر ہم ڈیٹ تک لکھ لیں گے اپنا ذرا دیکھ لیں کوئی پروڈکشن آرڈرز میں ان سے لے لوں گا 2 ہفتے میرے خیال Preferably, مسٹر فیصل صدیقی If your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes, یہ yes. کوئی general report No, نہ we ہو don't want numbers. یہ ہمیں آپ ہمیں نام دیں گے سب کے بلکہ ان کو دیں گے نا سر ایک گزارش اور ہے صرف جی وہ یہ ہے وہ فخر بھائی فخر الدین جی ابراہیم کا کرتے تھے کہ منڈے اگر فکس کرنے لگتے تھے کورٹ تو وہ کہتے تھے منڈے نہ ٹیوزڈے کا ان سے پوچھتے تھے جب جج صاحبان کہ وائی ناٹ منڈے تو وہ کہتے تھے کیس تو پتہ نہیں چلے نہ چلے پر سنڈے خراب ہو جائے گا تو ٹیوزڈے ایسے یہ بتائیے اعتزاز صاحب آپ ہمارے سامنے کبھی آئے اور آپ کا کیس نہ چلا ہو نہیں ایک ایگزامپل دیتے ہیں نہیں اگر نہیں چلا تو آپ کی ایڈجرمنٹ کی درخواست آئی ہوئی ہوگی ہماری طرف سے ہم پورا بورڈ ختم کر کے جاتے ہیں اب آپ دیکھ لیں 3:30 بجے ٹھیک ہے اگر آج ہم آپ کو دیر تک سنتے مگر آج ہماری JCP کی میٹنگ ہے Very grateful. وہ 3 بجے رکھی ہوئی ہے ادروائز وی ٹرائی ٹو فنش دا بورڈ ایٹ لیسٹ آئی ٹرائی ٹو ہیومنلی پاسبل ون آف آور کولیگز از ناٹ ویل she is seriously unwell and she's come and sat in court بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں صرف ایک بات کرنی تھی بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں ملٹ صرف ایک بلوچ پروٹیسٹ کے بارے میں پروٹیسٹرز کے بارے میں بات کرنی تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پٹیشن پینڈنگ ہے ہماری وہی ریکویسٹ کریں آپ نے کچھ نہیں فائل کیا مگر ہم نے اٹارنی جنرل کو آلریڈی کر دیا ہے سو فار رسپانس